Hello, hi, good evening, everybody. Hoping all of you are doing well. I'm Aditi, your educator for the subject English. तो शुरू करने से पहले बस मैं एक बार देख लूँ कि क्या हम ऑडिबल हैं, स्क्रीन विजिबल है. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. परफेक्ट, इट्स वर्किंग फाइन. चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. एटम 2.0 की बात कर लेते हैं जल्दी से. पहले पेपर 1 पेपर 2 आपको मिल रहा है. वैल्यूएबल पैक है इन डिमांड. यू आर गेटिंग दिस फॉर 13,999. इसके अंदर पेपर 2 में जो भी सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं नीचे दिए गए हैं. इसमें आपको मिल रहा है बेसिक टू एडवांस कोर्स, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, लाइव सेशन, क्रैश कोर्स एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. टाइम बहुत कम बचा है, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन गेट फॉर योर सेल्फ. तो देरी मत करो और आ जाओ इधर. इसी के साथ अगर आपने अभी तक JRFAdda के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो उसे जाकर कर लो, और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया सो प्लीज़ डू दैट एज वेल. आज का जो हमारा सेशन है वो होगा फेमिनिज्म के ऊपर. आपने देख भी लिया होगा ऑलरेडी सेशन ज्वाइन करने से पहले. ये सिर्फ एक टीज़र है बिकॉज वी हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू. सिंस अभी बहुत कम दिन बचे हैं तो हम सोच रहे हैं कि एक फ्री क्रैश कोर्स लेके आया जाए यूट्यूब पर, जिसके अंदर हम टॉप 50 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट. जो वो एरियाज लेकर आएंगे जो थोड़ा रेपिटेटिव है एग्जाम में, उनको थोड़ा डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे उनका. तो वो 50 टॉपिक्स हम लेकर आएंगे. और ये जो आज का सेशन है वो एक टीज़र है. अगर अच्छा लगे तो फिर देख लेना कि आगे के 50 टॉपिक्स कैसे होंगे. सो शुड वी जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. गुड इवनिंग कार्तिक. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. सो फेमिनिज्म है क्या? बहुत बहुत बातें होती हैं फेमिनिज्म पर, हाउ इट इज़ एंड हाउ व्हाट डू वी रेफर और व्हाट डू वी मीन बाय दैट. फेमिनिज्म इज बोथ अ थियोरेटिकल एंड पॉलिटिकल स्टैंस दैट फोकसेस ऑन जेंडर एज अ सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस व्हेन रीडिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एज अ प्लेटफॉर्म टू डिमांड इक्वालिटी, राइट्स एंड जस्टिस. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. इसको भी हम क्लैरिटी में लाने से पहले बात करते हैं कि फेमिनिज्म डिमांड क्या करता है. इट जस्ट आस्क्स फॉर कि आपको इक्वालिटी मिले, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, कोई डिफ्रेंसिएशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो चलता आ रहा है एज हाउ वीमेन आर रिप्रेजेंटेड एज वीक, इनोसेंट एंड हाउ दे आर सबॉर्डिनेटेड. तो ये जो चीज़ें रूटेड इन है, या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रिएट करते हैं ये आइडियोलॉजीज को, एंड हाउ दे आर पीप्ड इन, एंड हाउ मेन प्ले अ सेंट्रल रोल हियर, बिकॉज these ideologies and these practices are created by men and for men. तो इसमें हमेशा जो भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा दिखाया गया है, तो उस सब के बारे में फेमिनिज्म बातें करता है. एंड फेमिनिज्म डिमांड्स जेंडर इक्वालिटी एंड इट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो फेमिनिज्म सिर्फ एक तरह का नहीं है. इफ वी आर टू डिफाइन फेमिनिज्म, देयर इज नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ अ फेमिनिज्म, बिकॉज इफ वी लिमिट the feminism word or its challenges and varieties to just one part, we are devaluing the rich history and diversity of the same. तो हर इंडिविजुअल के challenges अलग होंगे और जो उनके areas है वो सब अलग होंगे. So we can't just limit them. तो there are as many feminisms as individuals because everybody will have their certain challenges. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबके अलग अलग होंगे. So there is no need for a collective identity, but there is a need for कलेक्टिव आइडेंटिटी. वो एक यूनिफाइड जो कॉन्सेप्ट है वो एक चलकर रहेगा. बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म. सो एज वी मूव फॉरवर्ड यू विल सी दैट स्टार्टिंग में जो फेमिनिज्म आया, देन यू हैड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फिर आपके पास ब्लैक फेमिनिज्म भी है, एंड देन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ऑल्सो केम इन. तो आपको वो डिफरेंट जो है वर्जन्स देखने को मिलेंगे. सो द टर्म फेमिनिज्म जब हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म कॉइन किसने करी है. सो द टर्म वॉज कॉइंड बाय फ्रेंच फिलोसफर चार्ल्स फॉरियर इन 1837. ये आपको पता होना चाहिए. अब इसके अंदर जो फेमिनिज्म करता क्या है, सो ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्विटीज है, इट डीलिंक्स दिस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस एंड इट टेल्स यू दैट द डिफरेंसेस दैट अकर, इट इज़ नॉट नेचुरल. मतलब विमेन को एक सर्टेन कैटेगरी में दिखाया जाता है एंड दे आर मेंट टू फीड और टू जस्ट डू सम ऑफ द रोल्स. तो क्या वो स्टार्ट से ही ऐसे एंड हु क्रिएटेड दैट? सो दिस इज नॉट नेचुरल. दिस इज अ सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय men for men for their needs, for their benefit, to remain in that power, because जो power का idea है या जो power generation है, that's in their hands. तो the reason women are subordinated and oppressed.
moving on to our next slide, we'll just directly move into three waves of feminism कि क्या क्या waves आई और कैसे कैसे they asked for their rights. So history of the modern western feminist movement is divided into multiple waves. So the first wave that came in the 19th and early 20th century, they comprised women's suffrage movements and promoting women's right to vote. सबसे पहले उस टाइम पे women didn't have the right to vote also. तो उस वक्त पे सबसे पहला जो उन्होंने हक मांगा या जो पहला मूवमेंट आया वो सिर्फ वोट के लिए आया. एंड देन द सेकेंड वेव केम एंड बिगेन इन द 1960s, which is the women's liberation movement and campaigned for legal and social equality for women, focused on social, cultural and economic political rights. जहाँ पे उन्होंने और बाकी राइट्स की फिर बातें की, सोशल इक्वालिटी का हक मांगा, लीगल का, एंड फोकस किए बाकी और पॉलिटिकल राइट्स पे, इकोनॉमिक राइट्स पे. एंड देन व्हेन यू मूव टू द third wave which came in or around 1992, you saw that जो एक फोकस है या जो एक शिफ्ट है दैट ऑल्सो हैपनिंग, क्योंकि बिकॉज अब कॉन्सेप्ट्स आगे आगे आप देखो डाइवर्सिफाई होता जा रहा है. इट कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी, एम्फेसाइज्ड फ्लूइडिटी, स्पेसिफिसिटी, इनकॉर्पोरेटिंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी इन अ technologized environment. So now that they've talked about social, culture and economic political rights, so they've been moving forward and emphasizing the need for that fluidity and interpretativeness, post-structuralism time maybe. तो वो उन सब की बातें कर रहे हैं. And then there's said that we have a fourth wave as well, which started around 2012 or 2006, which has used social media and other digital platforms to combat sexual harassment, violence against women and rape culture. It is best known for the Me Too movement. तो आपको पता होगा दैट हाउ मी टू मूवमेंट केम इन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो इससे इनका कहने का मतलब है, या जो फोर्थ वेव का मतलब है कि दैट हाउ व्हेन समथिंग हैपेंस एंड हाउ people stand for their rights, and if a certain violence is happening, so the ability to speak that is happening on the social media platforms. आपको ट्विटर पे देखने को मिलेगा, even on Instagram as well. तो when we say that they've been used social media and other digital platforms, they've been using that. आपको ट्विटर पे हमेशा देखने को मिलता है that people really do stand up. So to combat sexual harassment and violence against women, तो इन सब की बातें होती है. So this is also said to be the fourth wave. मूविंग ऑन टू, तो जो हमारा राइट, वी हैव डिस्कस द थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. अगर हम पहला जो वर्क आया उस वक्त पे, सो दैट वाज फर्स्ट मेजर थियोरेटिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी वाज प्रोवाइडेड बाय मैरी वुllstonecraft. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, या इसके बाद भी जो बाद के राइटर्स ने क्या बोला इनके ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट है. पर पहले मैरी वुllstonecraft के बारे में देखेंगे. इनका जो मेजर वर्क है दैट वाज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, केम इन 1792 एंड इज सबटाइटल्ड विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे इन्होंने बात की कि जो विमेन है उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए. दे शुडंट बी सबऑर्डिनेटेड, दे शुडंट बी जस्ट कि उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भर दिया है, पर दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव एज वेल. सो हियर ऑल्सो शी एम्फेसाइजेज दैट दे ऑल्सो शुड रिसीव एजुकेशन. यहाँ पे एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि सिर्फ मेन ही नहीं, वीमेन शुड ऑल्सो रीड. एंड जो अकेडमिक करिकुला है वो दोनों का सेम होना चाहिए. जो आपका वो करिकुलम है, इट शुडंट बी डिफरेंट फॉर मेन एंड डिफरेंट फॉर विमेन, because it used to be different for women because जो curriculum है that was based on the household chores, उनको वो सब सिखाया जाता है, stitching सिखाया जाता है, but not that. It says कि वो intellectual development जो है या जो आप proper academic पढ़ रहे हैं वो दोनों का equal होना चाहिए. So this is something Mary Wollstonecraft focuses on. So she proposes that women must be treated as equals as they play a crucial role in society. Crucial role in society का मतलब है कि because they raise their children as well. तो वो जो आपका ग्रोइंग एंड बियरिंग अप है उसमें भी दे प्ले अ ह्यूज रोल. वीमेन शुड एक्वायर एन एजुकेशन एज दिस वुड अलाउ देम टू थिंक रैशनली, टू डेवलप देयर ओन इंटरेस्ट. सो मैरी वुllstonecraft इन सब के बारे में बातें करती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स एंड राइटर्स, और ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और फिर हर दिन एक राइटर और उसके की पॉइंट्स पे जाके रिसर्च कर सकते हो. सो द फर्स्ट इज ऑलिवर श्रेनर्स विमेन एंड लेबर.
वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन, जिन्होंने जो अभी अपने अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड में है, उन्होंने ये वर्क देखा भी होगा अपने सिलेबस में अभी. सिमोन de Beauvoir, द सेकंड सेक्स. बेटी फ्रेडन विद हर बुक द फेमिनिन मिस्टेक. कैथरीन एम रोजर्स, द ट्रबलसम हेल्पमेट. मैरी एलमन का थिंकिंग अबाउट विमेन. केट मिलेट्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स. एंड जर्विन ग्रेयर्स, द फीमेल यूनक. ये सब वर्क्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप की पॉइंट्स ले सकते हैं कुछ कुछ के, और कुछ वर्क्स अभी हम डिस्कस भी करेंगे. So the first is Virginia Woolf's A Room of One's Own, which came in 1929. जिसका पहला लाइन ये है that Woolf says language is gendered. So now what did she mean by language is gendered? उनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी लैंग्वेज है या जो भी राइटिंग्स है that were written by men and that were written for their benefit and by men and for men. तो language इसलिए gendered है, and we don't really find a certain relevance there because हमारा पार्ट उधर नहीं है. आइदर वी आर जस्ट लेफ्ट ऑन द इन द साइड लाइन, या फिर हमारा मेंशन ही नहीं है, वी आर जस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. तो लैंग्वेजेस जेंडर्ड से आपका वो मतलब है. फॉर वुल्फ एजुकेशन वॉज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट बट वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट फॉर एंड बाय मेन, सेलिब्रेट मेल वर्च्यूज, एनफोर्स मेल वैल्यूज, लैक्स सजेस्टिव पावर. यही जिसकी अभी हमने बात करी कि she also feels that education is a means of empowerment and it is, but was also aware कि जो भी वो text है उस वक्त पे जो भी available है, they are produced by men and for men. तो वो उन्हीं के ही advantage के लिए, उन्हीं के ही benefit के लिए, and they are in that power. They have their power and they are exerting that power. So और वो जो works है, the work of literature that they have, it celebrates male virtues, it enforces male values. वहाँ female का कोई mention ही नहीं है. They are not even existing there. If they are, they are just sidelined, or you know they are dominated, or मतलब repressive तरीके से आपको वहाँ देखने को मिलेंगी. So the famous line that Woolf writes here is, a woman must have money and a room of her own with a lock on the door if she is to write fiction. इस लाइन से Woolf का क्या मतलब है? अगर किसी ने ये टेक्स्ट अपने अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड में पढ़ा है तो what does this line mean? I'll just wait for 1 or 2 seconds. किसी को भी अगर पता है तो you can make a guess what she means by this line. हेलो, गुड इवनिंग. आज हम फेमिनिज्म पे डिस्कस कर रहे हैं. And I really feel this session would be productive because इसमें काफ़ी major works cover किए गए हैं and इनमें से काफ़ी questions आए भी हैं previous year papers में और हम वो भी discuss करेंगे. But अभी I'm waiting for this line that a woman must have money and a room of her own with a lock on the door if she is to write fiction. Virginia Woolf का इस line से क्या मतलब था? What did she mean when she was writing this line? You can make a guess. We have one answer. So that she could get isolated from the social burdens and stereotypes and work on something which she loves. Yes. Does anyone else wants to write? You have written that way too nicely. Money is something which is important, which will help her to be independent. Exactly. Money का यहाँ पे यही role है that you know she is talking here about a certain freedom and space. तो freedom से यहाँ पे उनका मतलब है कि in terms of money as well and in terms of an intellectual freedom as well. तो जो money का freedom है उससे उनको क्या help होगा? That it will give you the power to contemplate because obviously you'll have no financial constraints. So a financial constraint is something that won't hold you back because you have a certain amount of money. और इससे क्या होगा? You will have a certain power to think for oneself if you have that lock on the door because there will be privacy and you can think of your own. और यहाँ पे आप अपना एक time जो है अपने लिए निकाल सकते हैं and you can create something out of it. So by that line she means this only, and by space she refers that you should have a physical space, maybe a room of your own जहाँ पे कोई disturbance नहीं है. Especially how women live in our houses is कि उनके रूम में बिना ही नॉक किए कोई चला जाता है. For example, even our mothers as well, we just
slam the door and come in. We don't knock. और यही अगर हमारा कमरा होता है तो we say that please जब भी आप अंदर आओ एक नॉक करके आ जाया करो. So we are also talking about that as well, that how the scene pertains in the everyday reality. We have another which is economic independence. Yes, अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा तो आप बिना किसी बर्डन के आप कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन थिंक फॉर योरसेल्फ, सो यू विल हैव दैट सर्टेन पावर. एंड अ रूम ऑफ आवर ओन, यही आपका एक फिजिकल स्पेस है. यू हैव अ सर्टेन अमाउंट, यू हैव अ पेन एंड पेपर, यू हैव अ चेयर एंड अ टेबल, एंड यू कैन राइट, यू कैन हैव अ लॉक ऑन द डोर. आपको ये नहीं है कि अभी कोई भी एकदम से आ जाएगा. So by that she means all of this. And पर आप देखोगे कि इस वर्क के बाद third world feminist came in and they said that how is a Dalit woman supposed to have a room of her own, because they're just trying so hard to have 3 meals a day. तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर किसी के पास ये एक प्रिविलेज होगा. सो फॉर मार्जिनलाइज्ड क्लासेस राइटिंग इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ मटीरियल कंफर्ट दैट वर्जीनिया वुल्फ रेफर्स टू. तो मार्जिनलाइज्ड क्लास के लिए जो राइटिंग है दैट इज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज नॉट समथिंग दैट इज फैसिनेटेड बाय अ मटीरियल कंफर्ट. दैट वाज अ सर्टेन क्रिटिसिज्म दैट केम इस वर्क के बाद, एंड थर्ड वर्ल्ड feminist talked about it, and they said that writing is a means of survival for them, and it is not something that is coming out of a certain comfort. But Woolf here addresses her type of audience, her kind of audience. She's addressing women of her type. She writes for a particular kind of audience that resonates with her, and someone who can have a room of her own, who can have that material comfort. So she's talking to a woman of her kind. That's the highlight of her work, और जो भी आगे का criticism आता है. So in one section now, when we go forward and read A Room of One's Own, we come across a passage where she refers that in one section Woolf invents a fictional character, Judith, Shakespeare's sister, to illustrate that a woman with Shakespeare's gifts would have been denied the opportunity to develop them. Like Woolf, who stayed at home while her brothers went off to school, Judith is trapped in the home. She was as adventurous, as imaginative to see the world as he is, but she was not sent to school. कितना aptly she portrayed that how women and men actually work. So even in old times you get to see that women were meant to be in the houses. Even girls weren't allowed to actually go to school. तो वो घर पे रह के अपना काम देखते हैं, स्टिचिंग सीखते हैं, कुकिंग करते हैं. But whereas the men of the house and the boys are attending the schools and doing all kind of things that even a girl can do but isn't allowed to do. तो वहाँ पे वो उसकी बात करते हैं कि एक ही घर में रह के having the same skills and qualities, how Shakespeare was a kind of a man, but Judith, she wasn't even counted. Sorry. So this is something that Woolf talks about. Moving forward now, she comes with a concept and talks about androgyny, which is a famous concept and आगे भी काफी works में use होगा. Extolled the androgynous mind as the ideal, coming together of both masculine and feminine, a fusion. It is when this fusion takes place that the mind is fully fertilized and uses all its faculties. Perhaps a mind that is a single-sexed mind is not fully developed. So now what Woolf means here by androgyny when she mentions that, she says that if for example if a woman is writing a certain text and by writing she's being womanly and not thinking about the other part, so जब वो fusion ही नहीं होगा, so you'll have a certain work that won't do the justice, that won't do the justice to that particular kind of a literature, because you are biased here and you're not talking about the whole situation there. तो androgyny का मतलब है एक fusion of a masculine and feminine. जब वो fusion होगा, then your mind would be fully fertilized in order to produce something, produce a certain kind of a literature. Perhaps a mind that is a single sex mind, which is a manly or womanly, is not fully developed. So here she talks about fusion कि एक तरीके से वही होना चाहिए. So she says that the moment you are too conscious about your gender and you are too conscious about your own gender identity, then you wouldn't be able to produce a good literature. You would not be able to produce a good kind of a literature, good kind of product. So in order
that. So in order to that, one needs that fusion, one needs that masculinity and femininity coming together, so that you are not stuck in a binary approach. अब जो है men और male और female की जो है binary में stuck नहीं है, you have that fusion, you have created that coming togetherness. सो इससे आप एक अच्छा वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट शी मेंट बाय एंड्रोजिनी, एंड शी इवन हैज़ अ वर्क विच इज़ हर नोवेल Orlando, if you have come across that in your undergrad and postgrad, where there she explores this androgynous state where men and women as mind switch places in the same body. So अगर आप उसका समरी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें that how the same person has this both the phases and how that mind switches places. तो Orlando में वो बात होती है, and she uses that androgynous concept there as well. Nalini has answered economic independence. Yes, I think you mentioned this about Woolf, no? Yeah. Coming over to our next slide, which is another important work, Simone de Beauvoir's The Second Sex in 1949. यहाँ पे भी जैसे वुल्फ में एक मेन important line था, having a lock on the door, having a certain amount of money. Simone de Beauvoir also writes a famous statement which is one is not born but rather becomes a woman. इसका मतलब ये है कि you are not born with a certain kind of a responsibility, with a certain kind of the things that you are meant to be, but you become a woman in that social reality, in that construct, in that institutionalized sphere that is being created. Ki if you are a woman, you have to be this and this. You are a man, you can be anything. So she argues that man is considered the default while women is considered the other. What do you mean by other here is that you are subordinated, you come into that other sphere, you're not privileged enough when we say that men and women. So the former one is here has a certain power while the latter one latter one doesn't. So while the woman is considered the other, man is considered the default. Simone de Beauvoir's famous statement, one is not born but rather becomes a woman, and she states thus humanity is male and man defines women not in herself but as relative to him. She is not regarded as an autonomous being. She is the incidental, the inessential as opposed to the essential. He is the subject, he is the absolute, she is the other. How aptly she puts this here कि जो male है, he is the subject, he has that power, he is the absolute right figure, whereas the women is treated as the other, as a passive one, as someone who's fragile, weak, innocent. तो वो उस स्फीयर की जो सिमोन de Beauvoir है वो बात करते हैं that within the circle of duties जो imposed है एक maternal और reproductive function से, you're supposed to be that kind of a person, you're supposed to be into that kind of a sphere. So the essence of the women was in fact created at economic, social, political, religious level, representing the interest of men. तो जिस भी आप दायरे में fit हो रहे हैं, that you haven't created that for yourself. Men have created that. This is created by men for their benefit. So this is something all these writers come in and talk about. तो यहाँ पे हम यही बात करते हैं कि कैसे जो मैन है इज द सब्जेक्ट एब्सोल्यूट एंड शी इज द अदर, ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड की बात होती है. Coming on to our next slide, again another writer, Ellen Sholter, born 1941. She described the change in the late 1970s as the shift of attention from androtext to gynotext. Androtext होता है books that are by men and gynotext are books by women. तो अब जब starting में देखते हैं तो you see all the literature that you have is produced by men only. तो Sholter वो जो change describe करती है उस change को वो बोलती है that it is a shift from androtext to gynotext. And she coined the term gynocriticism. ये I think ये last paper में भी पूछा गया है, and it is also one of the important terms आपसे paper में पूछी जा सकती है, maybe in match up the following or in a one-liner statement. So this is the term from Towards a Feminist Politics, and her most influential book is A Literature of Their Own, and she writes how women were limited to certain themes in her writings by the prevalent male critical opinion.
So when women started writing, or they entered into literature and they're producing a certain kind of a work, so they're not exposed to multiple themes and genres, because वो जो एक particular set of literature है आपको पता है, and you are just limited into that only. तो starting में जो है आपको वही तरह का literature देखने को मिलता है. But how Ellen Sholter's work plays a role is that she interrogates the notion of male-centric male-centric canons, male-centric text and readings, where women either existed at the periphery or were non-existent. जो हमने अभी पीछे भी बात की थी when we were talking about Woolf, कि कैसे जो भी आपको वर्क ऑफ लिटरेचर है जो आपको देखने को मिलेगा, या जो कैनन देखने को मिलेगा, इट इज़ जस्ट मेल सेंट्रिक, ऑब्वियसली रिटन बाय देम ओनली. विमेन वर नॉट इवन राइटिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, एंड अपने लिए लिख रहे हैं और अपने ही फ़ायदे के लिए लिख रहे हैं, जहाँ पे विमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर कर रही है तो बहुत ही पैसिव तरीके से कर रही है, या बहुत ही पेरिफेरी पे है. So Ellen Sholter here highlights the importance of action-oriented politics and not just ivory tower intellectualism. She was herself an activist who contributed to women's struggle, anti-war protest and so on. So she has contributed, she is herself an activist, and she highlights the importance of action-oriented politics, that by just being there and just saying something doesn't make sense until and unless you're not applying it into your practical life. So now she gives these three writing phases जो वो बताती हैं. तो वो है फेमिनिन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल, ये 3 फेजेज है और ये आपको पता होने चाहिए. ये आपके मेंशन है इन टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में which came in 1979. She traces the history of women's literature, suggesting that it can be divided into 3 phases. जब हम फेमिनिन फेज की बात करते हैं तो वो सबसे स्टार्टिंग का फेज था, वेयर women writers imitated dominant male artistic norms and aesthetic standards. जब तक उन्हें पता भी नहीं था कि because they weren't really exposed to that certain kind of literature. तो जो भी था उसी कोई, या जो भी लैंग्वेज थी मेल सेंट्रिक कैनन टेक्स्ट था, so they were imitating that only. The moment you reach feminist phase पर, जो कि 1880 से 1920s तक था, वहाँ they saw that they protested against male standards and values and advocated women's rights and values, included a demand for autonomy in which radical and often separatist positions are maintained. मतलब वहाँ पे वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं, and they advocate that अपने खुद के rights, खुद की values, और they are coming against male standards and values. So they're speaking for that, and they're just not imitating any centric or any canon or language. मतलब वो धीरे धीरे they were realizing that because obviously they were diversifying. तो पहले imitate कर रहे थे जैसे ही they were producing, and then they started protesting. फिर आता है female phase, जहाँ पे there's this self discovery where they feel that they reject the feminine and feminist wala phase. They don't imitate, or they did the protest but not later, and then they thought and they felt that there's a need for that female writing and experience, कि हम खुद की ही writing लिखें जिसमें हमारे खुद के experiences हो, खुद का work हो, एक autonomy हो. So as the source of an autonomous art extending the feminist analysis of culture to the forms and techniques of literature. तो यहाँ पे वो women जो है reject कर देती हैं both the imitation and protest, which are the 2 forms of dependency, and turn instead to female writing and experience. तो जो ये key words हैं जिससे आप ये याद रख सकते हैं 3 phases, वो है फेमिनिन से आप imitating याद रख सकते हैं, because उस वक्त पे they were imitating dominant male artistic norms and standards. Feminist पे they protested. Female पे there was the self discovery where they switched to female writing and experiences. तो ये 3 phases की बात करती है Ellen Sholter. Next we move on to Toril Moy, and she plays a role, she is important, and कुछ critique भी है Ellen Sholter के ऊपर जो इन्होंने आगे दिया है, and she favors Virginia Woolf as well, and she explains the distinction between the terms feminist, female and feminine. ये इन 3 terms के बीच का आपको difference बताती है, that how feminist is a political position. जो female है that is a biology, a matter of biology. और जो फेमिनिन है that is a set of culturally defined characteristics, जो रिपीटेटिव यूज से या जो सोशल रियलिटी में अपने को कुछ देखने को मिलता है, दैट इज फेमिनिन, अ सेट ऑफ कल्चरली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो पर्टिकुलरली इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑफ दीज लाइज मच ऑफ द फोर्स ऑफ फेमिनिज्म. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट वी मेजरली टॉक अबाउट द फेमिनिन पार्ट. फीमेल जो है एक मैटर ऑफ बायोलॉजी है, फेमिनिस्ट आपका एक पॉलिटिकल पोजिशन है. सो व्हेन वी रेफर टू फेमिनिन विच इज अ कल्चरली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये टोरिल मॉय अपना 3 का डिस्टिंक्शन देती है. एलन शॉल्टर के फेमिनिन,
feminist and female, और तो इल्मोय के हिसाब से they mean to these. Now we'll move to our French feminist. So we had American feminist, British as well, and then French. French में जो तीन सबसे important है वो है Helen Cizot, Luce Irigaray, and Julia Kristeva. I would suggest that you read on these three writers and onto their works and the terms they coined and the concept they used. तो आप उसका थोड़ा ब्रीफ सर्च लेकर नोट्स बना सकते हैं इनमें से इन्होंने किसने क्या कहा, जिसमें से हम शायद 2 डिस्कस भी कर रहे हैं आगे. This is just one question for you. Who among the following proposed that the English language is man-made, not women-made? Your options are Mary Haas, Dorothy L. Sayers, Dale Spender, Carol Chomsky. इनमें से ये किसने कहा है कि English language man-made है, not women-made? I'll just wait for the answers. Who among the following proposed that the English language is man-made, not women-made? Any guesses? It's an easy unit आपका लिटरेरी थ्योरी का, काफ़ी स्कोरिंग भी है बिकॉज डायरेक्ट ही आता है. अभी कुछ टाइम से थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं बट इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी तो आप कर सकते हो अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को. आई वुड से कि आप फेमिनिज्म का यूनिट करके जा रहे हैं एग्जाम में. एंड वी हैव नॉट स्टार्टेड विद आर टॉप 50 टॉपिक्स सीरीज. मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था इफ़ यू गाइज वर हियर कि वी आर प्लानिंग टू कम विद आर सीरीज विच वुड बी अ फ्री क्रैश कोर्स जिसमें हम टॉप 50 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में. और ये जो आज का सेशन है दैट इज़ मोर लाइक अ टीजर ओनली. ये सिर्फ एक सैम्पल है. अगर आपको वो सैम्पल अच्छा लगेगा तो हम कल अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे. सो बिफोर यू गो, आप अपना आधा क्लास लगा के जा रहे हैं या पूरा लगा के जा रहे हैं, मेक श्योर दैट यू कमेंट if we should continue with this or not. Anybody who wants to answer this question? Okay, so the answer is Dale Spender. He says that English language is man-made. उनके बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे. So now we are talking about language and how there were certain lines that were spoken by our feminist writers. Virginia Woolf says that language is gendered. Language is gendered हमने पहले भी डिस्कस किया था कि how there is nothing that that's ready for her use, no common sentence ready for her use because the language, the product is created by men and for men for their benefit. तो उसमें या तो women sideline दिखेगी आपको या पेरिफेरी पे दिखेगी और जो language भी यूज हो रहा है they can't really find the exact terms that they can also use. Neil Spender man-made language बोलते हैं. Man-made से इनका मतलब ये है कि reflects its role as the instrument through which patriarchy finds expression. Then you have Helen Cizot, who coined the term écriture féminine, जिसका मतलब है feminine writing in the work of Laugh of Medusa. Kristeva came up with the term and used symbolic and semiotic to designate 2 different aspects of language, जिसमें symbolic जो है वो रेफर करता है phenotext को, जो कि एक language of communication है, representation है, और जो semiotic है that would be more like fluidity, जो genotext होगा. We'll discuss them in detail. This is Dale Spender's man-made language. In her 1980s book, she argues that in patriarchal societies, men control language and that it works in their favor. So, language is masculine. Again, वही same चीज़ है. जितने भी अभी writers हैं सभी यही बात कर रहे हैं कि how women were not even there. जो भी उनके common words थे, even they can't even use them for themselves because either they use against it or they don't really fit into these because these are created for men and by men. तो जो language है वो काफ़ी masculine है. So, it is man-made language. Each day we construct the world we live in according to these man-made rules. We select
pattern, and interpret the flux of events in the attempt to make life meaningful, and few of us suspect how deeply entrenched and arbitrary these rules are. We impose them on the world so that what we see conforms to what we have been led to see, and any one of the crucial factors in our construction of this reality is language. So वो उसका detailed explanation है, but basically she talks about that only, that how patriarchal societies में कैसे men language control करते हैं and बाकी चीज़ें control करते ही करते हैं. So the amount of power that they have within themselves and the amount of power that they've created for themselves, कि कैसे सब उन्हीं की ही बेनिफिट में काम हो रहा है. सो दिस इज समथिंग डेल स्पेंडर टॉक्स अबाउट. नेक्स्ट वी टॉक्ड हेलेन सिजू का एक्रिट्यूर फेमिनिन. सो विल जस्ट डिस्कस दिस इन डिटेल. इट वाज फर्स्ट कॉइंड एक्रिट्यूर फेमिनिन और फेमिनिन राइटिंग इन हर एसे द लाफ ऑफ द मेडुसा विच केम इन 1975. सो द रीज़न कि जो फेमिनिज्म का टॉपिक है वो भी क्रोनोलॉजिकली आया है, बिकॉज आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि एक्रिट्यूर फेमिनिन कब कॉइन हुआ या द लाफ ऑफ मेडुसा कब आया और बाकी वर्क्स के साथ. सो इफ़ वी डू इट क्रोनोलॉजिकली, सो आप बैक इन द माइंड यू कैन रिमेंबर कि ये वर्क पहले किया था, सो दिस would have come pehle only if you are preparing chronologically. So that is how chronologically preparation also helps. जब आप एग्जाम में अपना मैच द फॉलोइंग या chronology वाले आंसर्स पुट कर रहे हैं अपना सही. Accretive feminine associated with the feminine and facilitating the free play of meanings within the frameworks of loosened grammatical structures. She writes, women must write herself, must write about women and bring women to writing, from which they have been driven away as violently as from their bodies, for the same reasons, by the same law, with the same fatal goal. Women must put herself into the text as into the world and into history by her own movement. So she says that there should be a writing which is for them and they are writing for their use. एक वो free play of meanings होना चाहिए where you can create your words as well. You don't have to be that male centric notion में fit होना. So वो बोलते कि जैसे हमारी along with the bodies the way we have been driven away, तो उस वो पार्ट अब छोड़ के we should write and we should facilitate that free play. So we should put ourselves into that text. जो भी हम work of art produce कर रहे हैं, it should be ours. So यहाँ पे हेलेन सिजू उस बारे में बात करती है ना. Écriture féminine is another just word for feminine writing. Écriture is a French word which is writing. और ये लाफ ऑफ मेड्यूसा में she writes. तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा गया है. Écriture féminine, who coined it? So Helen Sizu is the one. Kristeva uses the term symbolic and semiotic to designate two different aspects of language, जो हमने अभी पीछे वहाँ किया. Phenotext होता है symbolic, जिसका मतलब है something that is a set of rules, जैसे हमने सोसियोर वाले में किया था. तो वहाँ पे हमने क्या set of rules, यहाँ पे उसी को ही हम बोलेंगे that something that has a certain order and authority, fathers, repression. यहाँ से इसका मतलब ये है कि somebody who controls the other, someone that is called the other, which is the women. So symbolic जो है वो एक language of communication और representation. Semiotic whereas is genotext, cora or the unrepresentable, that they're not something not by logic and order but by displacement, slippage and condensation. So this is something that Kristeva refers, or she adopts a word cora from Plato's Timaeus, जिससे उनका कहने का मतलब है it refers to the space that is occupied by a thing, can also refer to place or position, and in Kristeva's extension receptacle or womb. So here she talks about the womb also and how cora has no fixed unity or identity. तो वो यहाँ पे इसकी बात करती है. and also she has this another term which is abjection, ये भी क्रिस्तेवा का ही है. तो ये कुछ terms हैं that Kristeva used. Next is gender performativity. Gender performativity का concept हमें दिया जूडिथ बटलर ने in Gender Trouble 1990, where it says that gender is a continuous performance whose meaning can never be fixed for all time. We often we often don't differentiate sex and gender, but they too are different terms. तो जो जेंडर है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस है. कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस का मतलब है समथिंग दैट यू आर डूइंग ऑन एन एवरीडे बेसिस, एंड बाय दैट एवरीडे बेसिस you are just specified, or you're seeped into that ideology that this refers to this. So in Saussure's
so while in that previous session when we discussed sociology, we said that how a cat is a cat because cat is not a hat. So cat is a cat due to that, repetitive and continuous use, due to that performance, you get to know that okay, this is this. So even in gender also, that continuous performance makes you feel that this functioning sends this particular kind of a message, this clothing sends this kind of a message. सो जेंडर जो है वो एक फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है, उसका कोई स्टेबल मीनिंग नहीं है. इट इज़ अ परफॉर्मेंस, इट इज़ अ रोल इनएक्टेड बाय इंडिविजुअल एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड वन, इट इज़ एन ओपन एंडेड प्रोसेस एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. एंड हाउ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कम इन टू वे एंड सेज दैट कि कैसे टेक्स्ट जो है दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस एंड इट इज़ ओपन एंडेड, सो इज़ द जेंडर. It has to be repeated in order to be recognized. Bodies functioning in particular ways send out a message. So how men behave and how women behave in terms of language, in terms of clothing, which tells you that okay, this is a sign of their being as men, or this is their sign of being as women. So this is performance, where wearing a particular kind of clothing is the use of a language to declare one's gender. So you are wearing a sari, so you know who the person is. And if you're wearing समथिंग एल्स, अगर आपके बिंदी लगा हुआ है, सो यू विल बी रेफर्ड टू समबडी. तो वो एक जेंडर परफॉर्मेटिविटी है कि कैसे कि कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस है, एंड बाय दैट रेपिटेटिव यूज इनटू द सोसाइटी you are labeled as something, as men, as women, or as somebody else. Next is, so we have different kinds of feminism, and then we have black feminism as well, which underscores the need to include race and cultural differences within feminist arguments. Black feminism जो है वो बात करता है empowerment की, emancipation की, in not just women across all these societies, but in among their black men as well. And looked at issues of black women's labor and structure of family operation. वो देखते हैं अपना black women's labor पे, they do the labor studies as well. One of the best example is Toni Morrison. She has her work Beloved also, and this explores the possibilities of communities. तो black feminism अपनी race और cultural differences के बारे में बात करते हैं. Feminism, now this is the term which is coined by Alice Walker in Search of a Mother's Gardens Feminist Prose. ये टर्म एलिस वॉकर ने कॉइन करी है, और इफ़ यू डोंट नो द टर्म एंड एग्जाम में ये एक बार आया भी है, तो वी ऑफ्टन कन्फ्यूज इट विद समवन एल्स. एलिस वॉकर says that this is something as embracing the courage, audacity, and self-assured demeanor of black women alongside their love for other women, themselves, and all of humanity. So basically they talk about women bonding and sisterhood. इसी के साथ ब्लैक फेमिनिज्म में एक और राइटर है बारबरा स्मिथ, टुवर्ड अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क. नेक्स्ट यू हैव अ टर्म लेस्बियन कॉन्टिन्यूम, विच इज अ फ्रेज कॉइंड बाय एड्रियन रिच in her essay Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. ये टर्म इम्पॉर्टेंट है. इसी के साथ एक और है मैरी डेलीज का जिन एंड इकोलॉजी. ये कुछ थोड़ा ब्रीफ है. यू कैन गो आफ्टर द सेशन व्हेन यू आर रीडिंग फेमिनिज्म, मे बी यू कैन डिस्कस दिस इन डिटेल. आप थोड़ा सा इसको और पढ़ सकते हैं. एंड दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क्स. ये मार्क्सिज्म फेमिनिज्म से डील करते हैं. मिशेल बैरेट्स विमेन्स ऑपरेशन टुडे एंड जूलियट मिशेल्स का विमेन स्टेट. These are now questions, previous year questions. So the question 1 is, two statements है आपके पास. A Room of One's Own is a feminist essay about women's education, exclusion and writing by Virginia Woolf. Statement 2, In Other Worlds is a collection of essays written by Edward Said on contemporary ideas such as psychoanalysis and social theory. इनमें से कौन सी statement सही है वो आपको बतानी है. I'll just wait for the answer. We have an answer which is option 3. Okay, we have 3 answers. 2 has said option 3 and 1 option D. Statement 1 is true but statement 2 is false, and D is statement 1 is false but statement 2 is true. A Room of One's Own is a feminist essay about women's education, exclusion and writing by Virginia Woolf. अभी हमने पढ़ा कि जो रूम ऑफ वंस ओन है ये वर्जीनिया वुल्फ ने ही
लिखा है, एंड दिस इज अ फेमिनिस्ट एसे वेयर शी टॉक्स अबाउट विमेंस एजुकेशन. रूम ऑफ वन जोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट यू आर हैविंग अ रूम ऑफ योर ओन, यू आर हैविंग दैट लॉक ऑन द डोर, यू आर हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. सो वुमेन्स एजुकेशन की भी बात हो रही है, एक्सक्लूजन राइटिंग की भी बात हो रही है, तो वो ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकता. कार्तिक इज सेइंग ऑप्शन 3 नाउ, बट यू सेड ऑप्शन डी पहले. Yeah, exactly. Second is the, in other words, the work is by Spivak. So the reason statement 2 is false. Moving on to our next question, which of the following are representative text of gynocriticism? Your options are Patricia Mayer's Spax, The Female Imagination, Mary Ellman's Thinking About Women, Sandra Gilbert and Susan Goober's The Mad Women in the Attic, Ellen Moore's ka Literary Women, Kate Millett's Sexual Politics. Choose the correct answer from the options given below. I'll just wait for the answer. Do we have our answers? Waiting for the answer. गाइनोक्रिटिसिज्म हमने अभी पढ़ा था, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्क हो सकता है? इफ़ यू आर एक्वेंटेड विद द राइटर्स तो आप एक गेस कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो होम एंड रीड अ लिटिल अबाउट ऑल ऑफ दीज राइटर्स एंड देयर वर्क्स. वी हैव ऑप्शन 3. 3 आंसर्स हैं और तीनों में ऑप्शन 3 है. ऑप्शन 3 क्या है? बी, डी एंड ई ओनली. मैरी एल्विन्स, एलन मोर्स एंड केट मिलेट्स. हमारे पास है ऑप्शन ए, सी एंड डी, विच इज पेट्रिशियल मेयर स्पैक्स का फीमेल इमेजिनेशन, सैंड्रा गिलबर्ट एंड स्यूसन गूबर का मैड विमेन इन द एटिक, डी एलन मोर्स का लिटरेरी वुमेन. ठीक है, एक काम कर सकते हैं, नलिनी ने दिया है ऑप्शन 4. या नलिनी हैज द राइट वन. एक काम कर सकते हैं, सिंस ये पांचों वर्क्स ही इंपॉर्टेंट है, सो वाई नॉट सम ऑफ यू पिक अ सर्टेन वर्ड, सर्टेन राइटर एंड देयर वर्क एंड मे बी जस्ट गूगल इट अबाउट, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो कुछ और इसमें से ले लो, एंड यू कैन रिवाइज एंड रीड समवन्स अदर्स कमेंट्स एज वेल. तो आपके ये 5 के 5 वर्क्स, यू विल बी एक्वेंटेड विद देम. He said gynocriticism, तो मैम एलन शॉल्टर ने दिया था, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया. गाइनोक्रिटिसिज्म उन्होंने दिया था, पर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या व्हाट एलन शॉल्टर इज टॉकिंग अबाउट दैट, वो कौन सी बातें यहाँ पे हो रही है. सो मूविंग ऑन टू आवर स्लाइड. जस्ट अ मिनट. एलन शॉल्टर के गाइनोक्रिटिसिज्म में शी जस्ट सेज द बुक्स दैट आर बाय विमेन, जो विमेन्स राइटिंग्स है वो जो वहाँ पे फोकस करते हैं, बिकॉज दे सेड यू नो देयर हैज टू बी दैट शिफ्ट कि आप मेल सेंट्रिक नोशन से या उनके कैनन से बाहर जाके आप अपना वर्क लिख रहे हो. because उनके वाले में we are not even standing somewhere, we are not even represented, we are not even respected, we are not even counted. तो गाइनोक्रिटिसिज्म वो एक शिफ्ट आता है जहाँ हम अपनी राइटिंग्स की बात करें, जहाँ हम अपने बारे में, अपने लिए, अपने एक्सपीरियंसेस कुछ भी लिख रहे हैं, समथिंग वी आर हैविंग ऑफ आवर ओन, दैट इज गाइनोक्रिटिसिज्म. तो उसमें वो बोलते हैं कि तो जो हमारा अभी क्वेश्चन था वो यही था कि उससे रिलेटेड आपके कौन से वर्क्स हैं, या वो जो एरिया है, वो जो थीम है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस किस टेक्स्ट में हो रहा है. हमें बस ये क्वेश्चन था, इसका बताना था. वो हम तभी आंसर कर पाएंगे अगर हमें उन राइटर्स का और उनके वर्क्स का थोड़ा ब्रीफ है तो इसीलिए इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा पता होना इसीलिए यहाँ पे आपको ज़रूरी हो जाता है. सो आई वुड से दैट व्हाई नॉट यू डू दैट थिंग कि आप अभी यहाँ पे अपना एक एक ऑप्शन अभी सेलेक्ट कर लो कि आप इसके बारे में अपना सर्च करोगे, सो दैट यू डोंट हैव टू डू दी होल थिंग. और ब्रीफ के लिए देन यू कैन जस्ट मूव बैक इनटू द कमेंट सेक्शन एंड मे बी सी इफ समवन हैज रिस्पॉन्डेड.
because Karthik does that. Karthik also I think responded to the last work which I said as plastic, जो Coleridge का था. So he does that in the good way. I would say that this would help. Deepa, I think तुम्हारा question का मैंने आंसर कर दिया होगा सही से. Just let me know if you want to ask something else. चले आगे. This is the question 3 जिसमें आपको list 1 और list 2 मैच करना है. पहला है आर्की एक्रिट्यूर, नेक्स्ट इज साइबॉर्ग, थर्ड इज जेनोटेक्स्ट, फोर्थ इज हर्मेन्यूटिक सर्कल. ये किन किन थ्योरिस्ट ने बोला है हमें ये बताना है. ऑप्शंस में है जूलिया क्रिस्तेवा, डोना हार्वे, फ्रेडरिक श्लेमाशे, जाक डेरिडा. कार्तिक सेज आई सर्च केट मिलेट्स. परफेक्ट. ठीक है, कार्तिक का डन हो गया. ऑप्शन ई केट मिलेट्स का सेक्सुअल पॉलिटिक्स. प्रियंका सेज आई डू ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है पेट्रिशियल म्यूरस्पैक्स का फीमेल इमेजिनेशन. अरे वाह, परफेक्ट. ठीक है, सो वी हैव 2 ऑप्शंस ऑलरेडी. बचा बी, सी और डी. Deepa says no man, no ma'am, you didn't understand the question yet. तो फिर एक काम करते हैं, गाइनोक्रिटिसिज्म आपको समझ आ गया है क्या? गाइनोक्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो हमें बताने हैं. सो why don't you do one thing, since we are mentioning about reading certain work today, तो आप कुछ 2-3 वर्क्स या 2 वर्क्स पढ़ो, तब तक ये लोग भी अपना करके यहाँ लिखेंगे. एंड व्हाई डोंट यू रीड ऑल ऑफ दीज, एंड मे बी तब आपको क्वेश्चन का सेंस समझ आ जाएगा. वंस यू सी कि इनका जो थीम है या इनका जो कहने का मतलब है वो यहाँ पे समझाया गया है. इस क्वेश्चन का बस सीधा मतलब यही है कि हमें ऐसे टेक्स्ट बताने हैं जो विमेन्स राइटिंग पे फोकस करते हैं, जो उनके ये कैनन पे, उनके एक नोशन पे फोकस कर रहे हैं. इट डजंट हैज स्पेसिफिकली टू डू एनीथिंग अबाउट मेल सेंट्रिक. जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई कांट सी द कमेंट्स. और इसमें से ठीक है, जस्ट अ मिनट. Karthik says I was only remembering genotext, so I used the elimination method. Okay, we are talking about option C here. Good. Yes, cyborg is by Donna. और हमें एक काम और करना है. इसमें से आर्क एक्रिट्यूर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज सिंस वी डिड एक्रिट्यूर फेमिनिन, जो कि आर्क एक्रिट्यूर नहीं है. कई बार होता है एक्रिट्यूर से हम कंफ्यूज हो गए हैं, सो फील्स दैट वी डिड दैट ओनली. आर्क एक्रिट्यूर इज नॉट एक्रिट्यूर फेमिनिन, इट इज एन अनदर वर्ड गिवन बाय जैक डेरिडा. who gave answer 1? नलिनी, प्रियंका, कार्तिक. अरे वाह, तीनों का सही है. तो आर्क एक्रिट्यूर हो गया हमारा जैक डेरिडा. साइबॉर्ग इज बाय A4B2 डोना हार्वे. जेनोटेक्स्ट इज बाय जूलिया क्रिस्तेवा. हर्मेन्यूटिक सर्कल इज बाय फ्रेडरिक श्लेमाशे. ठीक है, ये आपको मेन टर्म्स तो इनकी पता होनी चाहिए, मे बी जस्ट 1 or 2 लाइन्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन. कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में हमें नहीं जाना है. इसी के साथ एक एक टर्म भी अपना आज के लिए पकड़ लो.
बिकॉज अब सिर्फ एक एक ही राइटर या वर्क पढ़ने से कुछ नहीं होगा. बिकॉज आई फील कि आप इस सेशन के बाद अगर इसी ही पे ही कुछ पढ़ेंगे तो यू आर जस्ट स्पेंडिंग मे बी 30 to 40 minutes ढंग से फॉर द प्रॉपर रिसर्च एंड नोट्स मेकिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. बिकॉज हम एक सेशन में 1 घंटा में बहुत कम डिस्कशन कर सकते हैं. एंड आज का सेशन बहुत क्रिस्प इसलिए भी है बिकॉज एक ही सेशन में आई प्लान टू कंप्लीट फेमिनिज्म का यूनिट सिंस वी डोंट हैव मच टाइम. एंड इफ़ वी आर इंट्रोड्यूसिंग टॉप 50 टॉपिक्स तो हम कुछ ऐसे ही करेंगे कि थोड़ा सा ब्रीफ वे में कर रहे हैं. बट आफ्टर द सेशन एंड्स प्लीज़ घर जाके थोड़ा पढ़ लो. एंड उसके बाद अगर हमारा कोई क्वेरी है तो हम नेक्स्ट डिस्कशन में वो सब करेंगे. ठीक है. ऑप्शन ए दीपा ऑल्सो आंसर्ड. क्वेश्चन 4 है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ. लिस्ट 1 बुक्स हैं सेकंड सेक्स, फेमिनिज्म, सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड जेंडर ट्रबल. लिस्ट 2 जे फ्रीडमैन, जूडिथ बटलर, सिमन दे बुवुआर एंड केट मिलेट. काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सबका सही होना चाहिए. इसमें कोई गलत नहीं होगा. We have option 1. Option 1 again. ये तो बहुत इजी था ये आंसर करना. कर दिया सबने. सबका ऑप्शन 1. हाँ जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. आंसर 1. ग्रेट, परफेक्ट. इजी था आइडेंटिफाई करना. वी जस्ट रेड सिमन दे बुवुआर का वर्क सेकंड सेक्स. सेक्सुअल पॉलिटिक्स भी हमने डिस्कस किया, उसमें लिखा हुआ था. एंड जेंडर ट्रबल एज वेल, वी डिड जेंडर परफॉर्मेटिविटी. द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म रेफर्स टू. ये सवाल तो दीपा के लिए है अभी. और योर ऑप्शंस आर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, production of writings on women by men, analysis of androtext, production and analysis of writings by women on women. तो ये इसका आंसर क्या होगा? Karthik said C is common here in 2, so here elimination method can't be used. हाँ, वैसे हर बार एलिमिनेशन नहीं चलेगा. मतलब अगर सेम होगा, एक चीज पता होने से कैसे कहाँ कुछ हो सकता है. But Karthik has really mastered this elimination trick. I hope you are giving this coming attempt. We have an answer which is option 4. Production and analysis of writings by women on women. Okay, ठीक है, एक बार सभी दे दो फिर Karthik with option 4. बहुत सही जवाब है, पर क्वेश्चंस बहुत इजी हैं आज के, नो डाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन जूलिया क्रिस्टेवास डेफिनेशन ऑफ कोरा. ये भी ऊपर अभी किसी ने पूछा था आई गेस. प्रियंका says I don't know we, but yes. ये किस कॉन्वर्सेशन में बात हो रहा है? I couldn't understand. दीपा से दिसंबर में आया था. हाँ जी, लास्ट वाले में आया था. Identify the correct option in Julia Kristeva's definition of Cora. Liminal space, space of the marginalized, non-expressive totality created by the bodily drives. Cora has no fixed identity. It precedes the linguistic sign. इसमें से हम एक सही जवाब देना है. Next year I have my attempt. Perfect.
you feel that you haven't prepared much, but तुम ये coming attempt भी दे सकते हो, so that you get to see how paper works, and you never know. Okay, yeah. Make sure you are giving this attempt, even if you feel that you haven't prepared much. Because और कुछ नहीं होगा तो you will be familiar with the with the whole examination hall screen and everything. चीज़ें पता लगेगी, comprehension देखोगे तो पता लगेगा कि बहुत ही comfort zone में नहीं आ रहा है. You have to flip and everything. So you will be just used to it. And also एक पेपर देखे आते हैं और उसके बाद जब फिर तैयारी में लगते हैं तो शायद थोड़ी अच्छे तरीके से हो पाती है, because पता लगेगा कि कहाँ से और किस तरीके से पढ़ना चाहिए. Oh, you're in your first year of the masters. Okay. Perfect. ठीक है, we have answers. Option B is also the answer, which is the right. तो मतलब सिर्फ दीपा का सही है, नलिनी एंड कार्तिक दोनों का गलत है. Julia Kristeva's definition of Kora, you have the option 2, जिसका option है C, non-expressive totality created by the bodily tribes. Option D, Kora has no fixed identity. और option E है it precedes the linguistic sign. तीनों में देखोगे एक ही तरीके की बात हो रही है कि कैसे non-totality की बातें कर रहे हैं. And this is also related to a child also, the earliest stage of their psychosexual development, which is 0 to 6. And ये लकान से भी आगे मतलब उठा के concept भी आता है, that how you are dominated by a chaotic mix of perception, feelings and needs. I just googled this and this is the right definition that Purdue gives Kora ka. Says earliest stage in your psychosexual development, which is 0 to 6 months. In this prelingual stage of development, you were dominated by a chaotic mix of perceptions, feelings and needs. Should we move to our next question? Yes, exactly. Liminal spaces by Homi Bhabha. इसमें से अगर आप फिर भी थोड़ा भी सिमिलैरिटी देखोगे तो आपको नॉन एक्सप्रेसिव टोटालिटी से दिखेगा. कोरा का कोई एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है. इट हैज नॉट अ सर्टेन राइट ओरिजिन और राइट मीनिंग. इट प्रीसीड्स द लिंग्विस्टिक साइन. समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ मीनिंग, उससे पहले का जो सीन है दैट इज कोरा. And it is something that Julia Kristeva also refers to her womb also, a mother's womb, when the child is inside. तो वो जो एक conversation है या वो जो एक meaningful चीज़ है, that is also termed as Kora. Should we move to our next question? Which of the following is correctly matched? Sexual politics, second sex, feminine mystique, dialectic of sex. Your options are Kate Millett, Shulamit Firestone, Betty Friedan, Nicholson. Choose the most appropriate answer from the options given below. Yes, Kristeva refers Kora ko womb. Just I said that mother's womb. Deepa is a pro. I mean, I was about to say liminal spaces by Homi Bhabha. So good. Karthik has a competitor right now. We have an answer, option 3. A and C only. Okay. ये तो बहुत इजी है. और किसी को आंसर करना है?
Okay, Karthik has also answered option 3, A and C only, which is the right answer. Next है, what is the correct sequence of the following feminist text? Your options are sexual politics, a world of difference, the female imagination, thinking about women, a room of one's own. इसका आपको correct sequence देना है. Again, if you did your preparation chronologically या थोड़ा भी आपको एक idea है तो हम एक correct answer निकाल सकते हैं. And in the last one, dialectic of sex दिया था Shulamit Firestone ने. And second sex we know Simone de Beauvoir. We have option 3, option C, okay, which is EDACB, which is the right answer. Room of one's own. हमारा आज का session में भी right from the start we just discussed about Ellen Sholters and the room of one's own. Perfect. So I think this is it. Okay, so Room of One's Own we know by Woolf, Thinking About Women is by Mary Ellman, Sexual Politics is by Kate Millett, Female Imagination है Patricia Mears-Pax का, World of Difference है Eleanor Holmes Norton का. Yes, Feminine Mystique is by Betty Friedan. But it's not here, no? Yeah, A and C were the right only. I think this is our last question of the day. Which of the following denote the 3 phases of literary feminism according to Ellen Sholter? Your options are feminine, gynae, womanish, feminist and female. Choose the most appropriate answer from the options given below. It was a good question and answer session. I enjoyed. काफ़ी ने बहुत सही भी दिया, 2 easy थे पर बहुत सही आंसर्स थे. दीपा has said please do fast ma'am. तब तक किसी का आंसर आया नहीं होगा. See, Karthik also answered late, so I was waiting for everyone. Karthik has answered option 3, which is A, B and E. Option 2, A, D and E. Option 2 is the right answer. A, D and E. We discussed starting में Ellen Sholters के जो 3 literary phases हैं वो थे feminine, feminist and female. How come gynae came in? Since you answered wrong. Easy peasy. But yeah, these are easy peasy only. आज का फेमिनिज्म सेशन comes to an end, and from tomorrow onwards or from Monday we are planning for top 50 topics. So just let me know if we should do that and how was today's session. थोड़ा मुझे एक idea देना, and what else can we do? Any suggestions, any changes? You're open for that. Feel free to comment. We can interact there. Yeah, that was our starting slides, but then we discussed about Ellen Sholters and then her 3 phases and moved forward with the other works. Option 2. Session में जाने से पहले like comment करके जाना, so that I also get to know कि who attended and who were there. So let's come to an end. I hope you enjoyed, and I hope the series that we are bringing make you feel productive and you enjoy this 1 hour session. और make sure कि इसके बाद आप घर पे जाके थोड़ा पढ़ रहे हैं, and जो भी आपको वो भी काम मिला है, make sure that you are doing that. So this is it. Let's wind up and prepare well. Take care. Bye.